अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शंस। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, होप्स हो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, उसका टाइटल है वाई जापान इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन बांग्लादेश। जापान जो है वो बांग्लादेश में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। पहले भी हमने इस पर 2 वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में भी देखते हैं कि क्या क्या रीज़न्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। Let's start the video. 3, 2, 1, start. Japan and Bangladesh are two countries that have one of the strongest social and economic relations among other partnerships. This, however, has often been overlooked, and people think that there is little connection between the two. But Japan is a renowned economic ally to most Asian countries, but is more so in the nation of Bangladesh. From 1972, a year after its independence, to 2020, Japan has collectively provided financial support of about $24.71 billion US, either as aid, loans, grants, technical assistance, and so on. At the same time, in 2020, Bangladesh became the largest recipient of Japan's Official Development Assistance, or ODA, an amount that is estimated to be $2.6 billion, which also makes Japan the single largest development partner at that year and only behind an institution called World Bank by a small margin. Moreover, a report published by the Japanese International Cooperation Agency, or JICA, stated that the Land of the Rising Sun has assisted hundreds of major projects around the country of Bangladesh. These range from the transportation system such as the Dhaka Mass Rapid Transit Development Plan and Bangladesh Subway Project, to energy-generating schemes such as the Matabari Power Plant and urban developments in helping advance digital Bangladesh to even improving the overall private sector by direct investments. So why did Japan choose Bangladesh as its hottest economic partnership and investment destination? Before we move on, don't forget to leave us a like and subscribe for more videos. Just a year after the independence of Bangladesh, Japan established diplomatic relations between the two. By 1973, Japan extended various programs that would initially help the small economy by sending over volunteers. A year later, established an office for its cooperation agency, JICA, and sent its first ever ODA loan. Fast forward to the 1990s, Japan and Bangladesh have established a one-of-a-kind relationship that helped Bangladesh's economy grow. This is through rigorous investments, trades, and further infrastructure development assistance. By 1992, Japan officially became a leading partner in terms of ODAs, which continues up to today. The entrance of the 21st century, on the other hand, was the century when Japan had leveled up its investments. In the years leading up to 2014, JICA has assisted energy projects after energy projects, and these JICA-backed schemes would eventually power 25% of the entire total power generation of the nation. These are likewise seen in other sectors such as transportation, urban and rural developments, education, and health systems, and eventually placing assistance in the majority of the country's various sectors. And these are actually being thought of as real pure quality and kindness from the Japanese, as it aims to tackle the challenges of the land and increase the economy, as it is because back then that these are often thought of as pure commercial interests. Today, we can see the relentless approach of the Japanese people. During the COVID-19 pandemic, which saw immense economic breakdown, Japan has been a leading figure by sending medical equipment and vaccines, budget supports, and other cooperations. Furthermore, the Japanese ambassador, Ito Naoki, stated that Japan is looking to invest a lot more into Bangladesh as soon as the pandemic ends. One example where these funds may go is the upcoming Narayangad Economic Zone, which will see Japanese factories flourishing within the establishment and be a central manufacturing hub for vehicles, electronics, and mobile phones. These have the potential to become an investment hotbed worth around $1 billion from Japan and see 100,000 jobs be created. And the future of both countries has a long way to go.
there are currently several initiatives that are bringing the two countries closer, such as the Look East initiative that aims to help Bangladesh grow closer to the Eastern Asian nations. The Bay of Bengal Industrial Growth, or Big B, which was initiated way back in 2014 by then Prime Minister Shinzo Abe and Prime Minister Sheikh Hasina, on accelerating the development of Dhaka-Chittagong Cox's Bazar Belt through various programs, which aims to fully transform the country to become South Asia's industrial hub. These and the so-called private enterprises have aided the country. Today, over 300 Japanese companies are operating in Bangladesh, which is triple that of 10 years ago, and we expect this to grow further. And these companies have become a source of improving the technological advancement of the nation. What stands out, however, is the continuous support of Japan's public and private sector in helping transition the very lives of the Bangladesh society to the next wave of life in the digital world. तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि जापान जो है वो काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है बांग्लादेश में, और एनर्जी सेक्टर में 25% इन्वेस्टमेंट्स हो गई है जापान की वजह से। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो हैं बेनिफिट्स होंगे। एक तो इसकी वजह से जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, और जो इकॉनमी है वो बूस्ट अप करेगी, और नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बांग्लादेश में ओपन होंगे। तो ऑब्वियसली ये दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छा है, दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर होंगे। बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगी है। उन्होंने बताया जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है 1971 से लेकर, उससे बाद ही बांग्लादेश में जापान ने अपनी एक जीका के नाम से एक ऑफिस ओपन कर लिया था और इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दी थी, लोन दिया था, और आज के दिन तक 300 जो जापान की कंपनीज हैं वो बांग्लादेश में काम कर रही हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान के साथ चाइना जिस तरह से कोऑपरेट कर रहा है, इसी तरह से मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ जापान जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लें है, उसके बाद पावर के सेक्टर में 25% जो पावर का सेक्टर है वो जापान की वजह से बांग्लादेश में वो चल रहा है। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इस जापान की इन्वेस्टमेंट की वजह से बांग्लादेश बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, कोई तभी इन्वेस्ट करता है किसी कंट्री में कि वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हों। तो बांग्लादेश बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसी वजह से जापान और बहुत बड़े बड़े मुल्क जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो वी आर रियली वेरी इम्प्रेस्ड। फ्रेंड्स, आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। आप अपनी कोई वीडियो जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जिस पर हम रिएक्शन दें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमें रिकमेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।